So, welcome students. Today we are going to see what is the importance of earthing, what are the different types of earthing, and how the electrical engineering materials which are being used to have this arrangement of earthing is very important in terms of finding the right material, using the right material with the appropriate cost, and maintaining the very low value ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस सिस्टम। तो ये क्या सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। एंड इन दैट केस आई वुड फर्स्ट लाइक टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज द अर्थिंग। नाउ यू कैन सी एन इमेज हियर इन व्हिच देयर इज अ पर्सन who has maybe accidentally or purposefully touched the electrical circuit where an outer metallic surface is connected to that human body, and due to the human body which is connected to earth, the amount of current is trying to flow from the human body to the earth terminal, and that travel of current, that flow of electrons is causing an effect called as a shock, electric shock to the person, and then that particular shock is basically sometimes fatal, or maybe that is leading to the death of a person, or maybe that is leading to the person's partial disability, or due to the shock person may fall on the ground. If the person is standing at a very high location or a high elevation and that person loses his balance due to the electric shock, then also he may fall from that way long top location to the ground and may experience any injury. So it is very important that we should provide some mechanism by which these outer metallic surfaces will not have the effect, or they will not have a impact on this particular human being who is coming in a contact with the electrical outer metallic surface. Now, the chances of this particular earthing mechanism is that, or we can just define it in this way, the process of connecting metallic bodies of all the electrical apparatus and equipments to huge mass of earth by wire having a negligible resistance is called earthing. Now, why we are focusing on negligible resistance? Because when we talk about the negligible resistance, it means the human body which is offering an resistance to the electric path, if it is more, then current will try to flow from our earthing connection. Because as you know, अगर आपको कहीं पे जाना है, even the Google map will show you the shortest route possible, right? So electricity will also follow the shortest route, but in terms of its resistance. जिस रास्ते पे resistance कम है, वहां पर आपको ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो वहां पर से जाएगा. And though it is an undesired current, because the current which is causing this kind of accident, it is definitely an undesired current, and then that undesired current is basically taken out from its outer metallic surface to the earth. Okay, now this particular concept is again elaborated, that why we are doing the earthing and why we should know about the earthing is that we need to identify the material, and we must know which type of material is suitable and how that material is going to help us in providing the better earthing solution. Okay, so let's see what is the purpose of earthing. First of all, it is for saving the people, saving the life of danger, human life which may be in danger due to the shock, electric shock, and then death. So we will have some kind of circuit prevention mechanism, that is called as a fuse or a MCB. That switchgear devices will not be sufficient, or they will not be having say for example a secondary line of defense, or you can say second line of defense, and that will be your earthing mechanism. Okay, and then we have the next point, that is to provide the stable platform of operation of a sensitive electronic equipment and to maintain the voltage at any part of the electrical system at a known value, so that there is no any overcurrent or excessive voltage on the appliance. Now, electric shock is related with the current, not
with the voltage. Like if we see the varieties of videos which are available on internet, when a person is standing on a railway train and he immediately turn out into a black coal or a black carbon when the electric current is passing through his body at very high level. Okay, so now, and that for preventing the person from the shock, risk of a shock, we need to provide the earthing. So now let's see what are the different types of earthing and how we are going to do it. So first is earthing electrode. First component of the earthing system is a earthing electrode. So you need to write it down, earthing electrode, and we are interested in the resistance of the earthing connection or earthing system. तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है. Like you can see here, there is a earthing electrode which is buried inside the earth. Like you can see in the image, the green is like representing a grass, or we can say the earth surface, and the brown one indicates the soil where there is a earth pit is being made, and in that electrode is put. Okay, so first component is that earth wire, second one is a connector, and third one the earthing electrode itself. Now first type of this earthing electrode is your plate earthing. Now plate earthing, which is made up of a square or a rectangular piece of plate made up of either copper. Now you got the material. So which material is used for plate earthing? Type your answer in the chat box. Copper as well as GI. GI stands for, give me the full form in the chat box. Anyone can unmute also and tell me the answer. No issue. What is the full form of GI? Anyone? Am I audible? Yeah, GI is for galvanized iron, and the galvanized iron or a copper plate, earthing plate, is buried inside the ground of the depth not less than 3 meters. Now here you want to understand this language. Now why I am trying to tell you the language part, because in the technical writing you always have a tolerance. Okay, what is the word? Tolerance. Tolerance का मतलब क्या है? That if I tell you we are going to conduct the lecture for 1 hour, then you know that it is 1 hour is equal to 60 minutes. But you are not sure the lecture will go for 55 minutes or a 65 minutes. So that 5 minutes is a tolerance. Okay? जो margin हम बोल सकते हैं common man या layman की language में, तो वो हो गया आपका tolerance. तो not less than 3 meter का मतलब ये है कि मिनिमम 3 मीटर तो होना चाहिए ग्राउंड लेवल के नीचे. ओके, नेक्स्ट इज द अर्थ वायर. अर्थ वायर को कनेक्ट करने के पहले दैट इलेक्ट्रोड शुड बी हैविंग एन अल्टरनेटिव लेयर ऑफ कोक एंड सॉल्ट. अभी जो आपकी जनरेशन है उसके लिए कोक का मतलब क्या है? कोल्ड ड्रिंक. तो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोक इज अ फॉर्म ऑफ कोल. ओके, तो कोक का मतलब क्या है ये आपको फाइंड करना है. मैं आपको चैट बॉक्स में देता हूँ. कोक एंड कोल में डिफरेंस क्या है ये आपको फाइंड करना है. कोक एंड कोल में क्या डिफरेंस है? शायद ये आपको 10th स्टैंडर्ड में हुआ होगा. ये टॉपिक हुआ है क्या? एनीवन नोज अबाउट दिस कोक एंड कोल? यस और नो? हेलो. यस सर. क्या होता है बताओ सर. ब्लैक सब्सटेंस होता है. कोल डाला जाता है, सॉल्ट या कोल, क्योंकि कोल वाटर ऑब्जर्व करके रखता है. तो कोक का मतलब क्या है ये मेरे को बताओ. कोक एंड कोल, कोल COL, कोल, कोल मतलब कोयला. कोयले से निकलता है वो ब्लैक वाला सब्सटेंस. ब्लैक वाला कोयला ही रहता है. बट कोक का मतलब क्या है? व्हेन वी आर बर्निंग और हीटिंग द कोल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वी क्रिएट और वी कन्वर्ट द कोल इनटू द कोक. और ये इसके ऊपर आपको स्टडी करना है. ओके, गूगल पे रिसर्च करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करना है कि कोक क्या होता है और कोल क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. सर, कोक अ सॉलिड ब्लैक सब्सटेंस होता है. हाँ, तो कैसे बनता है? कोल से. फ्यूल. कैसे? व्हाट इज द कोल प्रोड्यूस करते हैं. कोल फ्यूल से बनता है. क्या क्या? कोल किससे बनता है? सर, कोल यूज होता है फ्यूल से ना. अरे कोल इज अ फ्यूल, बट हाँ, और वो फ्यूल का नाम क्या है? फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल. बराबर. यस सर. तो कोल आपको
अगर आपने उसको हीट किया, उसमें से सारा मॉइस्चर कंटेंट निकाल दिया, यू बर्न दैट कोल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यू हीट दैट कोल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर हाँ एक्सपेरिमेंट 9 में क्या करना है। श्रेयस किधर है, किधर रहता है तू, क्या चल रहा है यहाँ पे, तेरा क्या सवाल है। श्रेयस ना, कौन श्रेयांश, कौन है श्रेयस शिंदे। ऐसे तुम लोग लिंक क्यों तोड़ते हो रे। हाँ श्रेयस, क्या मिला, क्या मिला तुझे अभी ये सब ऐसा बीच में पूछ के। हाँ, जो सर पूछ रहे उसको कुछ जवाब नहीं दे रहे। एक वो कौन है, निखिल लोअर, वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है गूगल एक टैब में ओपन करके, उसको भी तुम जवाब नहीं दे रहे। सीआर ने अभी कुछ तो गूगल करके बताया, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, और आप क्या पूछते हो एक्सपेरिमेंट 9 में क्या करना है। हाँ शिंदे, कसं चालणार असं, कासच करणार तू परत परत, नाही ना। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। So that coke has a capacity to absorb the moisture and keep the moisture along with that salt. Salt का भी वही खासियत है, salt will absorb the moisture. और ये दोनों coke and salt will absorb the moisture and keep our earthing electrode in a presence of moisture. Now, as you know, there is a soil surrounded by the electrode, and because of the soil we need our electrons from that earthing current to flow to the soil. Okay, soil is nothing but the earth. तो वहां पर अगर moisture होगा, तो उस समय पे there is a very less amount of resistance which we will observe. और ये करने के लिए we are putting this alternate layer of coke and salt in the nearby or vicinity, you can say, of our earth electrode. Okay, आगे बढ़ते हैं. Then this earth wire made up of either copper or Gi is connected to the plate with a contactor or a connector, and that particular connector is basically holding that copper wire or a Gi wire into a place where it can be having a प्रॉपर कनेक्शन एंड रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अभी प्लेट अर्थिंग का डायग्राम आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आपको ड्रॉ करना है, और वंस यू ड्रॉ इट जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स। ओके, ड्रॉ दिस राइट नाउ इन योर नोटबुक। ओके, डन एवरीवन, परफेक्ट। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ पाइप अर्थिंग। नाउ ओनली थिंग इज दैट विथ आवर प्लेट अर्थिंग वी आर just changing the electrode shape. Earlier it was the plain surface, and now it is a pipe. So basically a pipe which is connected to the earth wire, and that earth wire is, give me a moment. Okay, so I hope you have gone through this. Pipe earthing mein we have seen different type of electrode, and now what is the difference is only the electrode type. Like we have seen earlier in here, this yellow one is a plate, electric earthing plate. Here we have the earth electrode in the form of pipe. Okay, let me, is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So now draw this diagram and give a heading pipe earthing. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. चैट बॉक्स में बताने को बोला था ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। This pipe earthing and this rod earthing is similarly. These are the different types of earthing. Now we are going to see the materials. Again, same thing. You got the idea about the earthing, right? Yes, sir. Identify different materials used in its. What is the grounding and earthing? ये सारा स्टडी मटेरियल आपके पास अभी अवेलेबल है. These are the different materials. This is the equipment earthing. ये स्टडी मटेरियल जो है वो आपको एक बार रेफर करना है, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू राइट द रिपोर्ट. इज दैट ओके एवरीवन? What is the outcome of this experiment? That we need to identify this particular earthing सिस्टम क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया है. और अर्थिंग सिस्टम समझने के बाद हमें ये देखना है कि अर्थिंग सिस्टम में जो भी कंपोनेंट या डिवाइस यूज हो रहे हैं उनको, वो डिवाइसेस को या वो कंपोनेंट्स को बनने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हुआ है. ओके, एंड जनरली वी हैव सीन दैट इन द प्रेजेंटेशन. One is the copper material, copper as a conducting material, and
GI, that is galvanized iron, is also a material used for earthing plates and pipes. But before that, I would like to tell you, not only the earthing electrode and earthing wire and earthing connector is a important thing, but also when we talk about the concrete structure which you have seen, which is considered as a अर्थ पिट, तो वो भी बहुत जरूरी है. अर्थ पिट अगर है आपके प्रीमाइसेस में, then earth pit will be constructed with the brick and mortar, your construction materials. तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं. ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है.